हेलो स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ लिम्फ, कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पढ़ेंगे ये, ठीक। और ये हमारा लास्ट लेक्चर भी है, ब्लड सर्कुलेशन इन ह्यूमन बीइंग का लास्ट लेक्चर। इसके बाद हम नए चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। हमने रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन पूरी तरह से कंप्लीट ख़त्म कर दिया है, ठीक है। और आज का जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर है किसका, ह्यूमन ब्लड सर्कुलेशन का, जिसमें आज हम पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, फंक्शन ऑफ लिम्फ एंड कंपोजिशन ऑफ लिम्फ। ओके, तो चलिए। ओके, लिम्फ एंड लिम्फेटिक सिस्टम। Lymph is another circulatory fluid that is present in lymphatic vessel and lymph gland. Lymph is another circulatory fluid that is present in lymphatic vessel and lymphatic gland. Lymph is a light yellow fluid which contains a large number of lymphocyte cells, a type of WBC. Okay, lymph flow only in one direction from tissue to heart. Only one direction. Lymph flow only one direction from tissue to heart. Formation of lymph. You know that all living tissue of the body has a liquid which is present in between the cell. This fluid is called extracellular fluid, ECF. You know, आप जानते हो कि सभी लिविंग टिश्यू हमारे बॉडी के अंदर इसके या टिश्यू है, इनके चारों तरफ क्या है, वाटर, लिक्विड, ठीक, विच इज प्रेजेंट बिटवीन सेल, दो सेल के बीच, क्योंकि सेल से ही बना है टिश्यू, सेल से ग्रुप का सेल इज नोन एज टिश्यू। इनके बीच में क्या है, फ्लूइड है, ठीक, फ्लूइड है। इसी को कहते हैं क्या, हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। इसी को क्या कहते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड या ECF। when the ECF become older, it is collected by some blind vessel called lymphatic vessel. Now ECF become lymph. It now reach the lymph node like thymus, tonsil patches and spleen, where lymphocytes are called added to lymph. Lymph is finally drained into subclavian vein, venous blood circulation, which open into heart through vena cava. Okay, lymph and its composition. Composition of lymph is similar to blood, but it has no RBC. Composition of lymph is similar to blood. Composition of lymph is similar to blood, but it has no RBC. Blood have RBC. Lymph is rich in fats because some lymphatic vessels help in the absorption of fat from the intestine. Lymph rich fat because some lymphatic vessels help in absorption of fat from intestine. Lymph contain a high concentration of WBC, especially lymphocyte. Lymph contain a high concentration of WBC, especially lymphocyte. Function of lymph.
lymph help in the renewing of the ECF. It help in the absorption of digested fat, fatty acid from the intestinal villi. Lymph help in renewing of the ECF. It help in the absorption of digested fat from intestinal villi. Lymph node help in the maturation of lymphocyte, B cell, T cell, and release them into the lymph. Lymph help in the returning of protein and fluid from tissue to the blood circulation. Lymph help in the returning of protein and fluid from tissue to the body circulation.